Good, good morning, students. We are discussing chapter transport and communication, chapter number, yes. So students, we are discussing chapter transport and communication, that is chapter number 10, and in which we are going to discuss our next topic, that is water transport. So what do you understand by water transport? So the transportation by the means of water or sea, that is water transport. And water transport is an important mode of transport for both passenger and cargo traffic in India. So both passenger and cargo traffic. What do you understand by cargo traffic? That is the movement of goods. So it is a very important. Why it is very important? Because the first reason that water transport is the cheapest means of transport. That it is the cheapest means of transport. So जो costing land transport, air transport तो सबसे ज्यादा महंगा है, और लैंड ट्रांसपोर्ट के कंपैरेटिवली भी वाटर ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट जो पीपल का हो चाहे गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज एट अ चीपर रेट, और कॉस्टिंग जो रहती है वो क्या रहती है, चीप रहती है. And it is most suitable for carrying heavy and bulky goods. So those goods which are bulky and heavy. Bulky means require a large space. जिसको बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है. तो now you can think एयर ट्रेवल में इतना स्पेस नहीं मिल सकता. एंड लैंड ट्रेवल ऑल्सो ट्रक्स में और में भी क्या है कि वो भी इतना आपको स्पेस नहीं दे पाते जितना एक कार्गो शिप्स दे पाते. तो कार्गो शिप्स जो है वो लार्ज बड़े बड़े साइज की होती है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड स्पेस फॉर दिस हैवी एंड बल्की मटेरियल. The next thing, that water transport is eco-friendly. Why it is eco-friendly? Because the pollution comparatively other means of transportation, the pollution is less in water transportation, and it is also fuel efficient. And due to its fuel efficiency, it is the cheapest means of transport. Because आपका वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर फ्यूल, मतलब अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर कम होगा, एक्सपेंडिचर कम है, इन दैट केस ही पैसेंजर की टिकट्स हो चाहे कार्गो का मूवमेंट हो, तो वो भी क्या होगा, उनकी भी रेट्स क्या रहेगी, कम रहेगी. सो द वाटर ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. द फर्स्ट वन, दैट इज इनलैंड वाटरवेज, inland waterways, and the second one, that is oceanic waterways. So what do you understand by inland waterways and oceanic waterways? So inland waterway means, inland waterway का मतलब क्या हो जाएगा कि the waterway within the country, the waterway within the country is known as inland waterway. So these type of waterways are regulated by rivers, कैनाल्स. तो उनपे जो वाटरवेज, जैसे गंगा रिवर पे मान लीजिए बोट एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स और कार्गो को लेके जा रही है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनलैंड वाटरवे. द सेकंड वन, दैट इज ओशियनिक वाटरवे, दैट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल or movement of goods from one country to another one, from one continent to another one, by the means of water transport over sea. सी के ऊपर से, ओशन से जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट कर रहा है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहा है, तो ऐसे वाटरवे को व्हाट वी कॉल, दीज टाइप ऑफ वाटरवेज आर नोन एज ओशियनिक वाटरवेज. So we discussed about the two types of the waterways. That first one, that is inland waterway. So inland waterway, that is waterway within the country, and oceanic waterway, which is connecting two countries, two continents by means of ocean. Now let's discuss the first one, that is inland waterway in detail. So inland waterway was the chief mode of transport before the advent of railways, because railway too is a principal mode of transportation. We transfer, we regulate heavy and bulky goods through the means of railway. तो रेलवे भी सेम बल्कि हैवी गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मास ऑफ मटेरियल जो है क्या कर सकता है, मूव कर सकता है. तो अगर मैं बात करता हूं
रेलवे के आने से पहले, बिकॉज हमने खुद ने डिस्कस किया था कि रेलवे जो है इंडिया में, रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1853. The first train from Bombay to Thane that covered 34 kilometer distance. So 1853 से, if I'm talking about the time period before that 1853, so at that time the chief mode of transport was inland waterway in our country, because inland waterway is dealing with the transportation through the means of waterway within the country. Now it, however, faced tough and competition from road and railway transport. So why it is facing tough and competition from road and railway transport? So as we all know that India is a developing country, and now our road networks are fully in the way of development. तो हमारे road network बहुत अच्छे से develop हो रहे हैं. We discussed about the golden quadrilateral, we discussed about the east to west corridor, north to south corridor, and the expressways also we discussed. So these type of road development is somewhat giving competition to the inland waterways, because as we all know, some of the characteristics of the specifications of the road transportation also, that road transport is somewhat providing door to door service. So वो efficient means of transportation का category के अंदर है, तो it is somewhat now giving competition to the inland waterway. And how railway is giving challenges to the inland waterway, because railway also is a principal mode of transportation. वहां से भी हैवी बल्कि गुड्स जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. प्लस रेलवे के अंदर जो है एक लार्ज डिस्टेंस को रेलवे कवर करती है. जैसे हमारी ट्रेन जो है, अब हम तो मान लीजिए सूरत तक जा रहे हैं, लेकिन वो ट्रेन सूरत तक नहीं होके और भी आगे तक मडगांव तक है, कर्नाटका बेंगलुरु बेंगलुरु तक है. तो ये जो लार्ज डिस्टेंस कवर करती है, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज करिए इनलैंड वाटर वे को. मोर ओवर, diversion of river water for irrigation purposes made them non-navigable in large part of their courses. तो देखिए, as we all know कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट केवल और केवल इंडस्ट्रियल ना होके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज आल्सो गोइंग ऑन. And for agriculture, the most important thing is irrigation, because only through the means of irrigation a farmer can cultivate three types of cropping pattern during a year, that is kharif, rabi and zaid. ये हमने सब कुछ डिस्कशन किया हुआ है. तो उन कैनाल्स के बनने से, डैम्स के बनने से कहीं ना कहीं रिवर वाटर से जो नेविगेशन होता था, नेविगेशन दैट इज द मूवमेंट, दैट इज अ नाउ नॉन नेविगेबल. नाउ दीज रिवर्स आर नॉन नेविगेबल, क्योंकि बहुत सारा पानी को क्या कर दिया है, डाइवर्स कर दिया है. सो दैट इज ऑल्सो समवॉट the challenges faced by the inland waterway. You can see the figure 10.6, river navigation in the northeast area. Northeast area कौन सा है हमारा, that is comprised, that includes the states of Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya. So these states are located in our northeast part of India. Now India has 14,500 kilometer of navigable waterway and about 1% to the country's transportation. So if I am talking about, we discussed about the railway length also, कि railway जो है उसकी total length इंडिया में कितनी है, क्या है. So just like it, if I'm talking about the waterway that is navigable, that is available for the boats, for the movement of people through the means of boat, cargo ships, जिससे नेविगेट कर सकते हैं. नेविगेबल जो है दैट इज 14,500 किलोमीटर. कितना है टोटल आपका, 14,500 किलोमीटर. तो ये आपको ध्यान होना चाहिए. दैट इज ओपन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. 14,500 दैट इज ट्रावर्सेबल, accessible, open, that is open for the transportation.
सो इट कंप्राइजेस, और टोटल ट्रांसपोर्टेशन का कितना परसेंट इससे हो रहा है, मूवमेंट कितना परसेंट हो रहा है, दैट इज 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन इज थ्रू द मीन्स ऑफ इनलैंड वाटर वे. Now, inland waterway comprises river, canals, backwaters, creeks, etc. So, river से हम familiar है, कोई problem नहीं है. देखिए गंगा से है, गंगा जो है उसके अंदर बहुत सारे इनलेट वाटरवे हैं. कैनाल जो है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो बैक वाटर, मे बी इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू, दैट इज बैक वाटर. बैक वाटर आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है. तो बैक वाटर के रिगार्डिंग बता देता हूँ. इट्स टॉकिंग अबाउट द केरला. केरला में क्या है, जो ओशियन है, दैट इज अरेबियन सी जो लगता है, इंडियन ओशियन का जो पार्ट लगता है, वहां का पानी जो है वो लैंड सरफेस में अंदर की तरफ लो लैंड एरिया, जो लो लैंड कोस्टल एरिया है, उसके अंदर पानी जो है कलेक्ट हो गया, एंड दैट वाटर इज नोन एज बैक वाटर. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रीक? सो क्रीक इज स्टैंड्स फॉर द स्ट्रीम ऑफ वाटर. वाटर की ही कोई स्ट्रीम, जैसे एक रिवर होगी, कैनाल होगी, जस्ट लाइक इट अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज नोन एज क्रीक. तो ये देखिए, ये सब कुछ आपका इंक्लूड करता है आपका इनलैंड वाटर वे. ठीक है. Now, at present, 5,685 kilometers of major rivers are navigable by mechanized flat bottom vessels. So, 5,685 kilometers length of the major rivers are navigable. Navigable, that is open. That is open for traverse or the movement of the boats. That is navigable. So these are navigable by mechanized flat bottom vessels. Vessels here stands for the boats. Vessels here stands for the ships. And mechanized क्यों आया यहाँ पे? मैकेनाइज्ड इसलिए क्योंकि पहले जो बोट्स हैं वो क्या है, कौन चलाता था? वो वुमेन्स जो है, थ्रू द उसे मैनुअल मीन से चला. लेकिन अब तो सभी के अंदर क्या लगे, मोटर्स लगे. जस्ट लाइक द मोटरसाइकिल हम चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें जैसे इंजन्स लगे होते हैं, जस्ट लाइक दैट अब जो बोट्स है उसके अंदर भी क्या लगे हुए, मोटर बोट्स में इंजन लगे होते हैं. तो दैट इज मैकेनाइज्ड फ्लैट वाटर vessels. So for the development, maintenance and regulation of national waterway in the country, the Inland Waterway Authority, just like we discussed about the NHAI. NHAI हमने बात किया था, National Highway Authority of India. That is somewhat regulating, maintaining, constructing the highways of India, roads of India. Just like that, to maintain and regulate the inland waterway, national waterway in our country, there is one authority, and that authority is known as Inland Waterway Authority, and which was set up in 1986, and it is responsible for the development, maintenance and regulation of national waterways in the country. So Inland Waterway Authority is the apex authority to regulate and maintain inland waterway transportation in India. And when it was set up in the year 1986. Now, there are some waterway which have been declared as the national waterway, क्योंकि हमने roads में जैसे पढ़ा था national highways and state highways, roads. Just like that, there are some waterways which are known as national waterways of India, which is declared by the government, as the national waterway of India. Let's talk about this national waterway of India. The first one, that is national waterway number 1. So national waterway number 1 is connecting. This is connecting Allahabad to Haldia. इलाहाबाद को हल्दिया से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रहा है आपका फर्स्ट, दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 1. इलाहाबाद को हल्दिया से कनेक्ट कर रहा है. तो इलाहाबाद आपका यूपी में और हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल के अंदर. तो इलाहाबाद को हल्दिया से ये आपका कनेक्ट कर रहा है. दैट इज, सो व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस नेशनल वाटरवे? लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस नेशनल वाटरवे, and that is
It is one of the most important waterway in India, which is navigable by mechanical boats up to Patna and by ordinary boats. Ordinary boats कौन सी हो जाती है, जिसे कौन चला रहा है, मैन खुद चला रहा है, मशीन से नीचे. there is no use of machine. मशीन का यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है. दैट इज आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, आपकी नॉन मैकेनिकल बोट्स जो है हो जाएगी. और जहाँ मशीन का यूज हो रहा है वो मैकेनिकल. तो मशीन के यूज जहाँ पे होता है वहां पे क्या है कि उसको ज्यादा क्या चाहिए होता है, डेप्थ अच्छी चाहिए होती है. उस चैनल में डेप्थ अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि देखिए मशीन बोट है तो फिर नीचे तक क्या, पानी के अंदर भी वो क्या रहती है, सबमर्ज्ड रहती है. उसका एक लार्ज पार्ट पानी में भी सबमर्ज्ड रहता है. तो ये रीजन है कि आपका मशीन बोट जो है वो उसका जो स्पेसिफिकेशन अलग रहता है, नीड अलग रहती है. और एक जो ऑर्डिनरी बोर्ड्स है उसके अंदर अलग रहती है. सो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस. नाउ यू कैन सी हल्दिया फरक्का, दैट इज 560 किलोमीटर लॉन्ग है ये, क्योंकि टोटल ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 की अगर लेंथ की बात करते हैं देन इट इज 1620 किलोमीटर. आउट ऑफ विच द फर्स्ट पार्ट दैट इज हल्दिया टू फरक्का दैट इज 560 किलोमीटर, फरक्का टू पटना दैट इज 460 किलोमीटर. 460 किलोमीटर है ये आपका. And next one that is पटना टू इलाहाबाद दैट इज 600 किलोमीटर. तो ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1 है. तो स्पेसिफिकेशन भी हमें ध्यान होना चाहिए नेशनल वाटरवे के रिगार्डिंग. तो आपका हल्दिया वो वेस्ट बंगाल है, हमने डिस्कस कर लिया. फरक्का जो है ये भी आपका वेस्ट बंगाल है, पटना बिहार में है, इलाहाबाद आपका फिर यूपी तक. तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 दैट वी डिस्कस्ड. Now the next one that is Sadia Dubri stretch, that is total length of this national waterway number 2 is 891 kilometers. So 891 kilometer है total इसका. ब्रह्मपुत्र इज द नेविगेबल, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेशनल वाटरवे 2 है दैट इज ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र इज नेविगेबल बाय स्ट्रीमर्स. ब्रह्मपुत्र इज नेविगेबल बाय स्ट्रीमर्स अप टू Dibrugarh. Dibrugarh that is up to the 1384 kilometer and which is shared by India, sorry, which is shared by India and Bangladesh. So it is navigable up to the length of 1384 kilometer. Sadia, where it is located, Assam. Dubri that is also located in Assam. So ये दोनों ही आपका असम के अंदर रहता है. ठीक है. नेक्स्ट वन दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 3 दैट इज कोट्टापुरम कोल्लम स्ट्रेच. ये दोनों ही आपका केरला के अंदर है, ये आपका केरल में है. सो इट इंक्लूड्स वंस टोटल है 205 किलोमीटर लेंथ ऑफ दिस नेशनल वाटरवे नंबर 3 एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेच आर that is it include 168 kilometer of the west coast canal along with Champakara canal 14 kilometer and Udyog Mandal canal that is 23 kilometer. तो इसका भी 2 parts में ये भी divided है. Next one that is national waterway number 4 and national waterway number 4 is stretch of Godavari Krishna river along with Kakinada Puducherry stretch of canals and it is 1078 kilometer length. Next one national waterway number 5 and it specified stretch of river Brahmani along with Matai river delta channels of Mahanadi, Brahmani river and east coast canal. तो जो इंडिया का साउथ ईस्ट कोस्ट कैनाल है तो उस पे ये है और 588 किलोमीटर लॉन्ग है ये आपका नेशनल वाटरवे. तो देखिए 1 to 5 नेशनल waterways are given which are declared as national waterway of India by the government. These are declared as national waterway of India. तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए. There is one figure also given that is 10.7 national waterway number 3. National waterway number 3 we discuss Kottapuram Kollam that is in Kerala. You can see तो इसके अंदर ये 205 किलोमीटर लॉन्ग था टोटल, जिसमें से देख लीजिए कोट्टापुरम टू कोची ये भी आपका केरला में 0 से 30 किलोमीटर, कोची टू अलपुजा दैट इज 30 to 92, अलपुजा टू कोल्लम दैट इज 90 to 168, फिर उसके बाद चंपकरा कैनाल और फिर उद्योग मंडल कैनाल. और ये पूरा का पूरा आपका वाटरवे नेशनल वाटरवे नंबर 1 की नंबर 3 की सॉरी पिक्चर गिवन भी है. अगर आपको ध्यान हो तो केरल के अंदर एक बोट रेस होती है दैट इज ऑल्सो
ये इसी नेशनल वाटरवे नंबर 3 पे होती है और ये देखिए पिक्चर भी उसकी गिवन है, यू कैन सी उसमें रेस होती है, बोट की रेस जो होती है, दैट इज नाउ the Inland Waterway Authority has also identified 10 other, yes, the Inland Waterway Authority has also identified 10 other 10 other inland waterway which could be upgraded. The backwaters cuddle of Kerala. Backwaters में मैंने आपको बताया था जो केरला के अंदर है वो लैंड जो है वो ओशियनिक वाटर जो लैंड सरफेस पे आ गया, लो लैंड्स पे आ गया, तो उसको बोल दिया है बैक वाटर, तो उसको लोकल लैंग्वेज से कडल भी कहते हैं. Apart from providing cheap means of transport, they are also attracting a large number of tourism in Kerala. Because अभी just मैंने बात किया है that in Kerala boat races होती है वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा famous है. Also it somewhat increase the cultural heritage और the क्या कह सकते हैं इसको कि भी बोट की वजह से जो एक लैंडस्केप क्रिएट होता है, that landscape is center of attraction for the tourist. Now, apart from providing cheap means of transport, they are also attracting a large number of tourists in Kerala. The famous Nehru Trophy boat race, Vallamkali, is also held in the backwater. तो इसी के बारे में अभी हम boat race की जो बात कर रहे थे, that is Nehru Trophy boat race. Vallamkali is also held in these backwaters. तो वहाँ पे ये backwaters पे held होता है. So this is all about the inland waterway. This is all about the inland waterway students.